Should we start? Sir, I actually sent the solution in the chat. You're sending? I have sent my solution in the chat. Chat. Send again, beta. It's not showing. Sir, I have also sent. Sir, the solution is loading, sir. Okay. What's the problem? Listen. कुछ गड़बड़ लग रहा है, बट थॉट प्रोसेस को एक बार फिर से रिफाइन करो. Sir, can you check it in WhatsApp at least? What's up? Just a minute. Yes. So what answer you are getting from this? Sir, I know how to proceed with this later, but this is what I've taken. Okay. Sir, actually, I made a mistake in my solution of just. See, the meaning of this question is, right, what we required is, right, if I'm taking one of this is 2 to the power 10. So this is 2 to the power 10 minus 2 to the power 9 plus 2 to the power 10 minus 2 to the power 8, 2 to the power 10 minus 2 to the power 7 up to 2 to the power 10 minus 2 to the power 0. I started with 0 only, na? तो जो हम लोग का बाकी जो है 2 to the power 10 को अलग ग्रुप करो, एक 2 to the power 9, 2 to the power 8, 2 to the power 7 से लेकर 2 to the power 9 minus 2 to the power 8 plus 2 to the power 9 minus 2 to the power 7 up to 2 to the power 9 minus 2 to the power 0, right? Again, 2 to the power 8 minus 2 to the power 7, 2 to the power 8 minus 2 to the power 6 up to 2 to the power 8 minus 2 to the power 0, right? Certainly 2 to the power 7 minus 2 to the power 6 and so on up to 2 to the power 7 minus 2 to the power 0, right? Then 2 to the power 6 minus 2 to the power 5 plus 2 to the power 6 minus 2 to the power 4 up to 1, right? Then it will be 2 to the power 2 more terms. I guess I have to write 2 to the power 5, 1. Then 2 to the power 4 minus 2 to the power 3 and so on, right? This is the situation, right? We need some of this. The very simple question. It's a direct question. We need some of this. Now, how we can find the sum? So, clear now? Yes, sir. Right. So, how many times are you getting 2 to the power 10? Obviously, 10 times. 10 times. Right. So, 10 into 2 to the power 10 plus. But see, how many times I'm getting 2 to the power 9? Right. If you'll see. Getting it 9 times, but one 9, time it is getting subtracted. very good. Means minus 8 times. 8 times 2 to the power 9. And then we can see 2 to the power 8, right? 2 times I have to cancel out this and it's coming 8 times. So 6 times 2 to the power 8 plus 4 times 2 to the power 7, right? 2 times 2 to the power 6, right? Plus how many times 2 to the power 5?
Sir, 2 to the power 5 disappeared. Yes. So, and minus 2 into 2 to the power 4, minus 4 into 2 to the power 6, minus 6 into 2 to the power, oh, sorry. This is 2 to the power 3. This is 2 to the power 2, minus 8 times 2 to the power 1, minus 10 times 2 to the power 6. This sum we require. इसका सम होगा 16,398. Is this Sir, okay? the answer should be 3. Answer is 3. Answer is 398. 398, beta. Yes. So, like you can just, Katani, is this okay, na beta? Yes. Like we have to connect first and the last one, right? The calculation part of this question, you can say that that's a tricky part is the calculation only. Otherwise, very simple, straightforward question. Okay. सर जो मॉक टेस्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैंने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था आप एक बार बता सकते हैं Question, what number, beta? क्वेश्चन नंबर 16 मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था Just. Meanwhile, write down the question, then we'll discuss. Right. One more question on this. Again, a simple question, but please careful, right? Question number which one? 18. 18 you said, no? सर 16 16. Just try this one. Just I'm checking now. After this, we'll do na. This is a simple one, right? Again, a counting, right? And basic counting you have to do, right? Simple basic calculation.
सर यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स तक है या सारे इंटीजर्स? 100 to 900 के बीच में तो नंबर था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा 100 तो लेस ए और बी दोनों 100 और 900 के बीच है। अच्छा, था। मुझे लगा सिर्फ ए ही 100 से ज्यादा है और बी है 900 से कम। फिर भी उसी को रिवर्स कर रहे हैं ना। ए एंड बी आर इंटरचेंज इंटीजर्स, राइट। अच्छा, एक और कंडीशन यहाँ पर गिवन है, बी इज द नंबर दैट इज कमिंग विद द इंटरचेंज ऑफ ए, लाइक इफ a is xyz, so a is xyz, a is xyz, so b will be, now the counting. Not bad. थोड़ा और obtuse, थोड़ा वर्किंग और रहेगा। But I sent the answer. 7, सर मेरा करेक्ट है। Send हाँ, almost, मेरा almost, राइट। चलो देखते हैं। मैं स्टार्ट करूं? शुड आई स्टार्ट? सर 1 मिनट। सर मैंने ओवर काउंट किया या अंडर काउंट? like almost right, just maybe possible कि just one overlook is there or something. सर 1 मिनट। और मेरा फिर क्या है? Almost right.
सर आई थिंक वो वर्ड लोग समझ गया। हाँ, मैं भी समझ गया how कुछ many तो। distinct yes सर आखिरी डिजिट yes Utkarsh 900 तक ही था। सर सही है या गलत है? डिस्कशन के बाद सर पास में या नहीं? अब exactly मतलब you are into that but I have to see like you are thinking in the same way or not. Let's start everyone. यस सर। तो जस्ट अ मिनट। So सर कैन ए एंड बी इक्वल? हाँ maybe. Okay. Okay. Let's see. See, how many possible numbers are there, right? So this is A is nothing but 100x प्लस plus 10y प्लस z और b है 100z प्लस 10y प्लस x। 10y plus x दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99 इंटू एक्स माइनस जेड। into x minus. अब x minus g की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल? 1 2 3 4 5 फिर 6 0 to 9 no 1 to 9 1 to 9 और 0 to 9 नहीं होगा बिकॉज b का 1 to 9 ही होगा। Max- 0 भी पॉसिबल नहीं है। डिस्कस करते हैं, राइट? आइए देखते हैं, डिस्कस करें। yes। y 1 to 9 y 0 to 9 देख लेता हूँ। आर्यन आप बोलना चाहोगे? बोल लो बेटा पहले। सर आई डोंट थिंक कि इसमें 8 और 9 इंक्लूड होगा बिकॉज हम कोई लोग का बात नहीं, आप अपना लॉजिक दो। y नॉट 8 और 9। सर बिकॉज जो x और z है वो 9 हो नहीं सकते हैं and 8 and 9 are only x and z are less than 9 and x and z must be less than 9 and x and z must be greater than equal to 1। तो इसमें 8 का भी डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं होगा और 9 का भी डिफरेंस पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हम लोग का रेंज है 100 to 900। आप बोल रहे हो 9 का डिफरेंस नहीं होगा और 8 का भी नहीं होगा। 8 का भी नहीं होगा। मैं अगर 991 ले लिया नंबर एक, तो 901 पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 900 है। और एक नंबर मैंने ले लिया 805, ओके सर। तो 508, राइट? सर तो 3 और हो गया। 100 पे मेरे पास है 9। अब मैंने 900 अगर नंबर ही ले लिया तो 0 900 0 9 पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे इसका मतलब रेंज से 1 to 8 है। 1 to 8 8। तो 0 to 8 क्यों नहीं? 0 क्यों नहीं? सो क्योंकि x अगर 0 हो गया तो बस वो 100 से कम हो गया। नहीं डिफरेंस के लिए डिफरेंस x माइनस जेड। तो ए बी इक्वल होंगे तब तो 0 ही तो x होगा। माइनस से तो 0 हो सकता है। हाँ 8 अगर हम लोग का सेम एग्जैक्ट नंबर से लाइक एग्जैक्ट पैलिंड्रोम से लाइक 555 या 555 पैलिंड्रोम्स ये अगर 8 केसेस में वो 0 होगा। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस। मेरे को तो केवल इतना ही चाहिए ना, ये जो डिफरेंस है x माइनस जी, ये डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल है? ये 0 हो सकता है, 1 2 3 अप टू 9, इतने डिजिट्स हमारे लिए हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से डिजिट्स है जो पॉसिबल नहीं होंगे? सर राइट, 9 एंड 8।
9 नहीं होंगे, 8 पॉसिबल होगा क्या? यस नहीं। सर। राइट, कौन से नंबर के लिए 8 पॉसिबल हो रहा होगा? सर 8 हमेशा पॉसिबल नहीं, यस सर। 899 नहीं। मैक्सिमम है। x माइनस जी जो है उसमें कौन सा, कोई एक दो नंबर बताओ जिसके लिए जो डिफरेंस x माइनस जी का 8 आ जाए, एक नंबर को। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अप टू लाइक 7 तक हो गया। का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 8 के लिए कोई ऐसा पॉसिबिलिटी? नहीं सर, सर नहीं है। राइट, 8 के मैक्सिमम लिए भी 7। नहीं। राइट, 7 ऑब्वियसली है, 6 5 4 3 2, So इतने that there are 8 डिजिट possibilities, sir. जिसके लिए पॉसिबल है, आई होप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, दिस इज ए गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। राइट, लैंग्वेज पर मात मत खाना। लेट अस कॉल a positive integer n fortunate if the sum of its digits is a multiple of 7. ठीक है, गुड। एंड super fortunate if it is fortunate and if none of the number n plus 1, n plus 2 up to n plus 12 is fortunate, right? Find the smallest fortunate number. Right? सो फॉर्चुनेट या सुपर फॉर्चुनेट नंबर? अब मेरे ख्याल से सुपर फॉर्चुनेट होगा। अच्छा, हाँ सुपर फॉर्चुनेट ही, आंसर भेज दिया सर। फॉर्चुनेट तो मेरे आसानी से दिख जाएंगे स्टार्टिंग में। सुपर फॉर्चुनेट का ही भेजा है। सुपर फॉर्चुनेट, राइट? सो मैक्सिमम 3 to 4 मिनट यू हैव। सर मैंने भेज दिया ऑलरेडी। नहीं आया? अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, अभी डिस्कस करते हैं, देखता हूँ। सर सर ये शाम को ही किया था इसीलिए। क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन?
Yes. So it's not given how many digits of the number you can probably take. That like we have to prove or disprove in that way. A two-digit number is not possible, one-digit number is not possible, or something like that. And that is a hint only. Now that is a hint only. That nines will decide our future. Fortunate or super fortunate or not fortunate. The smallest we can, like largest to infinite we can go. The smallest we can find in that way. So should I start? Sir, 1 second. Okay. अरे रिजर्व भी है, मैंने देखा ही नहीं था, पता नहीं समय। सर आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया था पढ़ा। अच्छा, कोई नहीं बेटा, बहुत सारे आप लोगों के भी। Answer like handsome question, very good question, right? Like simple one, but we have to reach to the conclusion. वाह वाह, उत्कर्ष पत्युष, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, परफेक्ट। The hint you have to catch the nines. That's it. That is the hint. Krisip, try for that. You have to pick the nines. Because if it will change, then only you are not able to get the number that is divisible by 7. If it's not changing, then 100% from any number divisible by 7, right? You'll add the 1 to 12 term, then 100% the next term will be you'll get after 7. Let's suppose one number is 7, right? 7, and then you are adding 7 plus 1, 7 plus 2, 7 plus 3. So 14 will 100% 14 will be there. सर 14 का बात नहीं, 16 आएगा, 1 plus 6 7. Right? So कहीं ना कहीं मेरे को वो numbers like I have to go for that कि 16 only. But 16 plus 9, what is the number? 16 plus 9, 25. 25, then 2 plus 5 is? So 7. 7. Sir, smallest 993 होगा. Okay. So should we start? Should we start? आर्यन ने तो आंसर भी बोल दिया। आर्यन प्लीज, आर्यन योर टर्न। सर तो पहली चीज मैंने क्या किया कि जो हम लोग का
पहले का 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर है, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं ट्राई किया कि जितना ज्यादा गैप हो उतना वाला नंबर्स को इंक्लूड करके, तो मैंने 1000 को देखा, 1000 देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया मैं, तो फिर 1000 में क्योंकि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 1 है, तो इधर मैंने एक नियर बाय जो डिविजिबल बाय 7 है उसको मैंने देखा, तो जब 21 तो पॉसिबल नहीं था 3 डिजिट में, फिर 14 मैंने देखा कि हाईएस्ट 993 है, फिर 993 है, 14, 994, 15, 995, 16, 996, 17, 997, 18, 990, sorry, 993 21 है, 994 22, 995 23, 995 996 और सम 24 है, Good, 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 good. 100 1006 को जाके हम लोग का एक और एक आएगा जो कि 14 डिफरेंस है उसका। Utkarsh, same way or some different thing? Yes, sir. Same. Same. Patyus, Rishabh, same Sir, logic? I noticed that when the number of digits are changing, then there is a big gap and it is not following that 9 wall order. So That's I right. just went with it. Either I have to go Sir, with simple. Sir, I also similarly I took like n nines, फिर 5 nines के साथ काम किया, 4 nines के साथ काम किया, 3 nines पे अटक गया. Then I means worked on the digits. like you have to go with something like this. 9B. Right. The smallest. Then only the number is changing, then you'll get the gap. Otherwise, if you are going from any of the number 20, 30, 40, you are crossing that number. So 100%, the number will be always divisible in that. Right. So when I'm starting with this, so obviously from 90 to like, I'm going for 90, 91, 92, 93, 94, 95. So which number is divisible in this case? Right, 95. Right, 95. Okay, so if I'll go for this 95, right, in hundreds, are you getting anything? 106. So what are the difference you are getting from? I like this is 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oof, missed it. Right. So now I have to go for some 990. And from this, I have to check for the numbers. And obviously, why I'm going? Because I'm getting a big difference when I'm going from, when I'm changing the digits, right? So obviously 990, the first number is 993, that is divisible. So I can try 994 and 1001, 1002, 1003, that will be 1006. Right? So this gap is huge, right? 6, right? So 993 is the number. Is this okay? The same? Yes, sir. 999 beta. 993 is the number, right? So, okay, everyone. Okay. In a regular decagon, 10-sided polygon, how many obtuse angle triangle is possible? Obtuse angle triangle. In regular decagon. Maybe the question would be 2024, right? In 2024 polygon, how many
right? And find last 2 digits of this number or something like that, right? But I'm giving you just for understanding. 10-sided polygon, how many obtuse angle triangle are possible? Question is clear now. The question could be in two form, one odd number of sides, one even number of sides. This question I have given for even number of sides. Now, we have to find exactly. $90. I've sent my answer. So obtuse सिर्फ एंगल फाइंड करने या ट्रायंगल? Number of triangles. How many triangles are possible? Sir, I've sent my answer. Should I start now? Sir, Sir, two. मैंने Yes. अपना आंसर भेजा. Yes, Sanjana, ask please. Not getting your voice better. How many total number of triangles are possible? So that's 10C3. 10C3 is what number you are getting 10C3?
And Sir, is my answer correct? okay, explain. What is your answer? सर तो जो डेकागन में है हम लोग का पहली बात की इंटीरियर एंगल सारे 144 है, तो अगर दो दो लाइंस को अगर बीच में से ज्वाइन करते तो उसमें से 10 बनता है, और फिर उसमें से और एक ऐसा लाइक क्या, नहीं नहीं यार थोड़ा सा ज्यादा है। So I guess this is a regular decagon, something like that. Right. Sir, So since in chat. yes, with the vertex of this polygon beta, 1, 2, Sir, should it necessarily in the vertex or any point on the decagon also? vertex only. Then it will go to infinite, na? Okay. If you will take any of the points, so then it will be the right, directly go to infinite triangles. No? So see, this is the situation, and this is one of the triangle, but we don't require this one. What we require, what I'm saying is just I'm dividing this into two parts. Right. I'm dividing this into two parts. Right. So obviously one of the vertex I'm selecting and dividing this into two parts now. So 2n is equal to 10 or n is equal to 5. Can I say this? Right. So what is n? This is the even number. So I'm just generalizing this for any n. So I'm saying 2n for 2n sided, right? 2n side. I'm saying 2n is equal to, let in this question it is given 10. So 2n is equal to 10 to n is equal to 5. Now this is 1, 2, 3, 4, 5, right? If I'll attach any of the triangle with these vertices, फिर हम लोग 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 वैसे कनेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, नहीं तो 1 4 1 4 3 1 5 2 right? या ऐसा कुछ So ट्रायंगल्स I बना के can भी कर सकते हैं। say we have 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 options. I have 4 options, right? I have 4 options, and in these 4 options, right, I have to select 2 of the vertex. If I'll select 2 vertex, right? So this triangle, or this triangle, or this triangle, or this triangle, or this triangle, right? With one of the vertices fixed, right? I can say always I have the chances. Getting my point, right? So first we have selected 10C1 means 2nC1, right? And then it divided into 2 parts, right? So from this n minus 1 means 2n C1 into n minus 1 C2. These 3 vertex will always form an obtuse angle triangle. Is this okay? Yes. Okay. So it's simple, right? Keep this simple. If you are getting the number 2024 or something like that, na, you have to start with the simple figure or something. Right? Don't go for the number like the numbers are going, right? As if I'm giving you a question, just a minute.
find all natural numbers n for which the permutation row of 1, 2, 3 up to n that satisfy क्या satisfy करेगा summation I is equal to 1 to n sigma I into -2 to the power I minus 1 is equal to 0. All natural numbers and permutation of sigma. Are you understanding this language? What is that? क्या आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आ रहा है? यस सर। Go for it. Yes. सर सिग्मा ए का मतलब क्या होता है? सिग्मा आई मतलब हमने लिया यहाँ जो नंबर दिया 1 2 3 4 एंड तक, ये मान लो 5 तक नंबर है 1 2 3 4 5, राइट? तो सिग्मा 5 1 2 3 4 5 नंबर में से किसी एक से मैप करेगा, राइट? वो सिग्मा आई होगा। सिग्मा 5 मान लो 1 है तो 1 इंटू -2 टू द पावर 5 माइनस 1 4 होगा ओके सर। ना। सो लाइक बेसिकली हमने सबको एक ही फंक्शन से मैप कर दिया। 1 फंक्शन से मैप कर ना, और उसे मैप करने के बाद उसको हमने मल्टीप्लाई -2 टू द पावर I माइनस 1 से। ये क्वेश्चन देने का रीजन है, बताऊंगा क्यों। पहले आपको ट्राई करो, फिर इसके स्टोरी सुनाऊंगा कि क्या रीजन रहा ये क्वेश्चन क्यों नहीं। वेरी गुड अरेंजमेंट। सर 1 to 1 फिक्स्ड ऑर्डर में रैंडम में? हाँ, रैंडम। सर तो एन का कोई भी परम्यूटेशन इसे सेटिस्फाई करेगा? वही बोल रहा है कि कौन कौन से n की वैल्यू होगी, वही नेचुरल नंबर्स वी हैव टू फाइंड। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। ओके सर।
सर मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था, could you please explain the question? Find all natural numbers n permutation sigma 1 2 3 4 n that satisfy this condition. Sigma I into minus 2 to the power I minus 1 power में है दोनों, right, is equal to 0. Okay sir. तो इधर सिग्मा क्या है? ऐसे ही notation a number mapping. Question is clear ना? यस सर।
मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग, राइट, तो यू मस्ट स्टार्ट विद द इंडक्शन और थोड़े से छोटे केसेस लेने की कोशिश करो. गो फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 और समथिंग, राइट? Not bad. Now go for few of the numbers, right? Then you'll be able to just justify your answer, or you can say ki exactly how like we can solve this. Which will do. See, if I'm saying only I'm going for n is equal to 1, only one number, right? So एक ही number मैं लूंगा तो sigma 1 is equal to 1 only, minus 2 to the power 0, that is not equal to 0. Okay, justified. Second, n is equal to 2. N is equal to 2 means I have two options. Mapping is two options, right? 1, 1, and 2, right? One number is coming in this like if I'll write this 1 and minus 2. So obviously I can see like this will map with this will map with this. So the sum will be 0. Right? Right. बस सारे परम्यूटेशन कंसिडर करने पड़ेंगे. Only 2 3, only you have to use the mod for that, right? 2 3 4 के बाद में you can see कि okay, some repetition is there, right? So just we have to wait for the repetition. If the questions are coming in this way now, like I'm not able to like think from where I have to start, right? So go with few of the numbers, right? Or if it is given like 2024 or something, so go with a smaller one, right? Then we'll be able to build the things, right? So everyone try for 3 and 4, please. Go for 3. n equals 2 के लिए summation -3 भी हो सकता है ना? Like I'm able to get this or not, right? So I'm able to get this, right? There is some 3 के लिए. Yes sir. It's coming for 3. Yes sir. Very good. Very good. One, two, three. 1 minus 2 minus plus 4, right? So again, I can say this, right? So again, I'm getting, but if I'll see n is equal to 4, n is equal to 1 के लिए मेरे को नहीं आया था ये ख्याल है, और n is equal to 4 के लिए अगर नहीं आया तो आई गेस मेरा काम तो बन जाना चाहिए.
So every turn of this, right, I can say, obviously, this is going for this, right? So if 4 will go for 4, so this is not happening, not going to happen anything, right? And if 4 is not going to 4, so obviously the 3 will be not multiplying with 2, right? So I'm not getting this. Means n is 4 and then 5 and all, right? Obviously, if this is working, so I can say if like 3n plus 2 and 3 and 4, I'm getting this is going to be 0, and for 3n plus 1, I'm not getting this. Right. So if like they are asking what is the largest 2-digit number or smallest 3-digit number or greatest 3-digit number, so I'm able to find those numbers. Is this okay? Is this okay? Yes, sir. Aryan, सर n=4 के लिए प्रूफ कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है सब्जेक्टिव प्रूफ Guess just trial or errors. I something like that because हमको summation like trial error से ही करना पड़ेगा. नहीं, प्रूविंग तो होगा ना बेटा, जब ये प्रूविंग हो आ रही है तो आना तो चाहिए मेरे पास और आएगा वो तो, राइट? सर हम इसमें दूसरे मेथड से ट्राई कर रहे हैं. So n is equal to 4, I have like two of the options I can say. First, we have already seen that 1 to 3 mapping with 1 minus 2, 4 is 0, right? So obviously some other like number has to apply, right? 1 is not multiplying with 1 or 3 is not multiplying with, right? That will be wrong, right? So means 1 and 3 has to multiply with the even numbers, right? 1 and 3, like it has to go. So I have option of these three options, right? So 1 and 3 has to map with either -2, -4, and obviously I have to make this 0. So we have to make a greatest number with this. So 1 will be multiplied with -8, right? सर आई थिंक नॉट पॉसिबल. So that is not possible. मैंने केस वर्क कर लिया इसके लिए. So odd number must go to the even one, right? And one more. In how many ways a pair of parallel diagonals of a regular decagon be selected? In how many ways a pair of parallel diagonals of a regular decagon be selected?
Very good, Pius. First, you have to select parallel diagonals, right? Parallel diagonals. Yes. Should I start? Very good, Rishabh. Pius, उत्कर्ष, थोड़ा सा चेक करो अपने कैलकुलेशन. Sir, you won't believe this same paper Pratyush was solving the other day. Same paper was solved करा था sir. It's a question of pre-RMO only. I'll share this paper, right? It's a collection of all the questions of pre-RMO, RMO, INMO, AMC, and other examination, right? So your next assignment will be, as I said, the combinatorics problem, right? I'll share this file to you, right? Like you have to go through this. IMO questions are also there. Few of the Romania Olympiad and other exam questions are also there, right? And this week will cover this assignment. Huh? Why 10C2? Very good, Kasif. Very good. Should I start? सर इसको जनरलाइज कर सकते हैं. डायगोनल्स एंड इसके लिए तो बहुत सारे जनरलाइजेशन. थोड़ा सा हम लोग इस पे वेट कर ले. इसके तो बहुत बहुत अच्छे. इसमें सबसे बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो पार्टीशन के बनते हैं. एक सेकंड, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं कि कितने पार्ट्स में मैंने पूरे सर्कल को डिवाइड किया. सेकंड, right? How many parts we are dividing the circle if all the diagonals are not intersecting from, not passing through the one point or the concurrency is there, right? That's a very good question, right? So like थोड़े से वो अलग concept पे जाते हैं, but again 1 2 3. सर इसमें 10 ही साइड से तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि सर इसमें 2 पैटर्न्स होंगे डायगोनल्स के. अगर कुछ एन साइडेड होगा तो उसमें कैसे पैटर्न ऑफ पैरेलल डायगोनल्स. I have to take this is a even or odd. It's even or odd, right? So obviously the number must be even, then only we are getting the parallel diagonals or not, right? Right. For odd, the situation will be right. Situation will be totally different. Because there are only 3 pairs of parallel lines possible. 3 Or kinds. na, if I'll take 1 3 4 10 5 9 and 6 8. So 4 possible cases are there na. So this is 4C2 into what? 5 plus 3C2 into 5. plus the second case when I'll take this one, Yes sir. right? तो इसमें 2 पैटर्न्स हैं. So 10 or 5. Right. Right. 3C2 into 5. 5. So this is 30 plus this is 15. 45 na. Yes sir. Hey, it was. सर टाइपिंग में सर वो साइड भी ले लिया हम लोग ने.
हम लोगों ने मतलब 80 है। सर आंसर 80 आ रहा था क्योंकि मैंने वो साइड्स भी ले लिए 2 कि 3 और वो 8 7। ना पहले वाला हम लोग का क्या मतलब था वो तो पहले समझाओ। सर वो आरव की भाषा में लिखा है। मेरे से तो काफी कम है। Understand this, यस सर। right? But as I'm saying, like इसके क्वेश्चंस we have to work on this, right? क्योंकि इसके कम से कम इस तरह के क्वेश्चंस तो obviously we are getting ना, तो वो हम लोग को थोड़े से वर्क उस पे करने हैं। एक दूसरे क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेट थ्योरी वाले आते हैं कि सेट्स के साथ में लाइक यू हैव टू वर्क, राइट? थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन वी आर डूइंग दिस विद द फंक्शंस, राइट? एक क्वेश्चन मैं कहूंगा अभी देना, जस्ट अ मिनट। सर हम लोग सम ऑफ डिजिट्स वाले पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए सम ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चन एक कलेक्शन बना के ना, एंड इट्स गुड ना कि इफ यू आर पर्टिकुलर अबाउट दैट ना कि सर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे को चाहिए, राइट? तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, राइट? वी ऑल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। मैं जो क्वेश्चन चाह रहा था, जस्ट हम लोग, देखो ऐसे करके आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि आई एम इनटू स्क्रीन, दिख रहा है? हैं? सर कैन आई रिपीट? आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यू कैन फील दैट कि आई एम इनटू स्क्रीन, आई एम जस्ट वाचिंग समथिंग इन स्क्रीन, यू कैन फील दैट, हाँ? यू कैन सी इन दिस कि आई एम इनटू स्क्रीन एंड आई एम वाचिंग समथिंग ना। तो ये चीज मेरे को भी पता चलता है जब few of the students are into that. So that's the reason I always say कि please switch on your camera. See, one of the question. हाँ, लेकिन आपको पता कैसे चलता है जिन लोग का चश्मा नहीं होता? क्या नहीं होगा? हाँ, लेकिन पता कैसे चलता है जिन लोग का चश्मा नहीं होता? ये पता चलता है बेटा, वो फिजिकल क्लासरूम में आप लोग तो बहुत सारी चीजें सर के अच्छी अच्छी चीजें और भी दिखाई देगी। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 2010, राइट? Find possible values of A. Possible values, right? तो ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन चलेगा ना, ये पूरा करके। तो आई हैव दैट कलेक्शन। मैं नेक्स्ट वाले इस पे ना वेडनेसडे को इस बार मैं कुछ कॉम्बिनेट्रिक्स तो मुझे डिस्कस करने हैं, एंड वो डिजिट्स एंड वो वाले जो है ना बेस एंड डिजिट्स वाले क्वेश्चन वो मैं काफी सारे हम लोग कर लेंगे, राइट? सर एबीसीडी सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स।
up to how many? Means we have to find exact numbers. A, B, C, D are non-negative positive integers. And this is given A greater than B greater than C greater than D. सर वो ए का एक्चुअली अपर बाउंड भेजा है मैंने, जो नंबर है। Okay, तो मैंने अपना आंसर भेज दिया। अभी देखते हैं। सर सही है। So A, what you are getting A? Like 504, 503. So like how just you are saying कि this is maximum अपना आंसर ले लिया। maximum of A is 504 ना? हाँ सर। But नहीं सर, minimum value of maximum values of A504 आ रही है। maximum value जो आ रही है 1006 आ रही है और A 1005 504 और 503 कुछ लिख रहे हो, राइट? 503 नहीं होगा सर, क्योंकि C पे 503 हो जाएगा, फिर वो B और D के बीच में थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाएगा। 503, 504, 502. सर 504 एक्चुअली मिनिमम होगा ए का, यस क्योंकि सर। अगर ए उससे लेस हो गया तो 2010 रीच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। The minimum, like minimum, it has to be this one, 504. यस सर। Okay. क्योंकि ए अगर 504 से ज्यादा भी होगा तो हम लोग बी सी डी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। So this A is minimum, that is 504. सर इधर से A प्लस सी मुझे 1006 मिला और B प्लस D 1004, तो इसमें A 504 है, B 503 है, C 502 है, D 501 है। And number of possible A's we have to find, na? So how many A's are possible? सर वो अभी आर्यन ने जो बोला उससे निकाल सकते हैं ना, ए और बी के बीच का डिफरेंस हमें 1 पता है, राइट? ये मैं अगर मिनिमम 504 कर लिया, राइट? मिनिमम, तो मैक्सिमम आई कैन गो टू व्हाट? 1004. 1004. So how many numbers we have from 504 to 1004? 501। Answer is 501 na. Find A. Acha, you have to find A. Possible values. हमारा values of A is 501, minimum value of A is 504 and maximum is 1004। 1005 आएगा मैक्सिमम वैल्यू। 1000. इधर C फिर 1 हो जाएगा ना, D के लिए क्या बाकी रहेगा? D, A, B, C, D मेरे को फिक्स करने पड़ेंगे ना? जीरो नहीं हो सकता है. D will be 1. ओके सर, ओके, तो 1, 2, 3. 1004। So 1, 2, 3 then सर ए का मैक्सिमम 2004 होगा। A का वैल्यू ए का 1000. मैक्सिमम 2004 होगा।
क्योंकि फिर BCD को 3 to 1 कर सकते हैं बाद में। हाँ 3 to 1 मैक्सिमम। तो लेकिन वो फिर दूसरा वाला वो equation दूसरे को कंडीशन को satisfy सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। हाँ सर, सर 2004 3 to 1 फर्स्ट तो बहुत कंडीशन छोटे हैं उनके स्क्वायर, 2004 तो लाखों में है। हाँ वो दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। दोनों के रेंज को मिलाना है लास्ट में। हाँ हाँ। तो ये एक वैरायटी वाले क्वेश्चंस जो है ना, राइट, ये नंबर्स वाले जो डिजिट्स नंबर्स एंड ये रहेंगे ना, इसके काफी वैरायटी रहते हैं ना। सो ओके, तो एज आई सेड, लगता है एक और करते करते ना अधिक हो जाते हैं। परट्यूस रिसर्व 2 मिनट के लिए आप लोग रुक जाना ना। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। मैं अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को कभी करा नहीं पाया ये, बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। सर XYZW रियल सर? हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकते, रियल भी हो सकते। इट मे बी नेगेटिव वैल्यूज नॉट गेटिंग। Sir, I have done this question. अच्छा, फ्रॉम वेयर? सर एक मॉक टेस्ट में आया था। वेरी फेमस क्वेश्चन। ये XYZ W स्क्वायर होना चाहिए ना तीसरी इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वही है, भावनाओं को समझो। W तीसरे वाले में राइट, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हम्म and last these two are the homework ना। सर वो 186 है या 188? 186। right, this is 5 cross 5 square, right, 5 cross 5 square huh? All the numbers are positive, 21 vacant places are there, right? The number in each row and column form arithmetic sequence, right? Asterisk is given, you have to find what is the value in place of
star. So can you repeat the question? Right. In this 5 cross 5, 21 vacant places are there, right? Each row and each column form a arithmetic sequence, arithmetic progression. Fine. In place of Arithmetic star, what progression is the का number? common difference real numbers भी हो सकते हैं. Real number ही होता है. Okay sir. इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. फिर तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है सर, ऐसे क्या है? That we have to think, that we have to discuss, right? Positive, find positive solution of 1 upon x square minus 10x minus 29 plus 1 upon x square minus 10x minus 45 plus minus 1 upon x square minus 10x minus 69 is equal to 0. सर फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो दिया था वो हम्म हम्म सर आंसर बताना, मेथड बताना, क्या बताना? ना ना कुछ नहीं, आराम से रखना है. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें तब. उसके पहले सब लोग आंसर्स अपने अपने भेज सकते हैं, राइट? यू कैन सेंड द आंसर. Find ordered pair of A, B, C. That's it. A plus B is equal to B plus C. A plus B, A plus D is equal to B plus C. And BC minus 8 is 93. Okay sir. Yeah, 93. सर बट डी बी से ज्यादा क्रिएटिव है ना? Hmm. Right? This is the sequence ABC. Okay.